Hi guys, so in this video we are going to be discussing question number 1 of this paper, that is October-November 2018. The format has changed after 2020, so you guys must know, you guys must be aware that now the exam is for 1 hour 45 minutes and the course for O level is 7707 and IGCSE is 0452. So both the paper IGCSE and O level is just the same now. But the questions are still relevant, so you can always have past paper practice from the 7110 version as well. So here if you see the question, Lohit is a supplier of goods to Asanka. सप्लायर कौन होता है? सबसे पहले सप्लायर जो होता है जो गुड्स इन्वेंट्री आपको सेल करता है. सो फॉर Asanka, Lohit is a trade payable. ट्रेड पेएबल इज़ समवन जिससे आप गुड्स ख़रीदते हैं ऑन क्रेडिट, and goods also the other name for inventory. So when you purchase inventory from someone on credit, that person is your trade payable. Also this is your liability. So if you know this is your liability, तो आपको automatically पता होगा कि liabilities जो हैं वो क्रेडिट पे इंक्रीज़ होती हैं, डेबिट पे डिक्रीज़ होती हैं. सो that's the nature of a liability. So if you see the transactions here, they are saying the following entries require recording in the books of Asanka for the month of August 2018. So we are thinking from the perspective of Asanka. ठीक है, इधर इन्होंने आपसे शुरू में ट्रांजैक्शंस आपको बताई हैं. फर्स्ट ट्रांजैक्शन हियर सेज दैट Asanka owed Lohit. So owed means an obligation to pay. So at the start of the month 1st August, Asanka ने लोहित को $90 देने थे. तो अगर हम यहाँ पे इसको हमारे अकाउंट के अंदर डालें, सो राइट 1st August 2018, we'll write balance brought down. And why are we writing the balance brought down on the credit side? It's because it's a liability. Liabilities have balance brought down on the credit side. So here we say $90. लाइबिलिटी का बैलेंस ब्रॉट डाउन हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा. तो यहाँ पे इन्होंने शुरू में आपको बता दिया कि Asanka owed Lohit $90. इफ़ यू सी द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे आर सेइंग लोहित सप्लाइड गुड्स टू Asanka. तो इसका मतलब ये हुआ कि Asanka ने परचेज़ किए. ठीक है, एंड द लिस्ट प्राइस हियर इज़ $80 less 15% discount. So what is the list price? The list price is the price that is there written on the label of the product. तो फिर वो $80 लिखा हुआ था उसके ऊपर, but Asanka, because Asanka is a loyal customer for Lohit, or she is a very maybe they have a long relationship of working together. तो वो हमेशा लोहित से ही लेती है गुड्स, तो इस वजह से लोहित जो है वो उसको डिस्काउंट दे रहा है, ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट इज़ गिवन टू लॉयल कस्टमर्स एंड कस्टमर्स हु परचेज इन बल्क. ठीक है, सो हियर दे आर सेइंग $80 का प्रोडक्ट था. whatever goods Lohit is supplying was for $80, एंड इस पर जो है वो 15% का डिस्काउंट दिया गया है. डिस्काउंट, सो जो प्राइस ऑन द लेबल थी उसी को कम कर दिया. तो फॉर Asanka the product is not for it's not for $80 anymore. It is 15% less of the cost of the list price of the product. तो फिर इसको 15% जब हम निकालेंगे इसका, तो इसका जवाब आएगा it will be $12. तो $12 कम कर दिए इसने. तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंड दिस विल इंक्रीज द लाइबिलिटी, बिकॉज जब आप सप्लायर से और ख़रीदेंगे तो ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटी जो है वो उसकी तरफ बढ़ जाएगी. तो इफ़ यू सी हियर यू राइट द डेट हियर, यू राइट हियर August 9. सो 9th August you write purchases and you write $68. so 80 minus 12. और हम हमेशा जो है वो इसकी प्राइस को ही कम करके लिखते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली $80 वॉज द प्राइस ऑन द लेबल, लेकिन हमें Asanka को जो है वो कम देने पड़ रहे हैं, $68 देने पड़ रहे हैं.
If you see the next transaction here, Asanka returned goods $20, लिस्ट प्राइस $20 सप्लाइड ऑन 9th अगस्त. जो 9th अगस्त को ख़रीदे थे उसके जो उसकी जो लिस्ट प्राइस थी जो रिटर्न कर रही है उसकी लिस्ट प्राइस 20 थी, लेकिन जो रिटर्न कर रही है वो गुड्स उसको वो $20 की तो नहीं उसको वो $20 का तो नहीं मिला था ना, उसको वो हमेशा 15% कम में मिला था. तो इफ़ यू सी 20% का अगर आप 15% निकालेंगे so you'll get $3. So the returns she's making, this return she had originally purchased these goods that she's returning for $17. तो यहाँ पे आप लिखेंगे परचेजेस रिटर्न्स, एंड ऑब्वियसली परचेजेस रिटर्न्स जो है वो डेबिट साइड पे इसलिए आता है बिकॉज उससे लाइबिलिटी कम हो जाती है. एंड इफ़ यू नो द जर्नल एंट्री फॉर परचेजेस रिटर्न्स, you do purchases returns, you do trade payable debit and purchases returns credit. तो यहाँ पे आपने लिख दिया $17 and this will be August 10. And then on August 15 they are saying that Asanka paid a check for $97 after deducting a $3 discount. So whenever the discount is given on the payment time, तो जब पेमेंट टाइम वाला जो डिस्काउंट होता है, दिस डिस्काउंट इज़ कॉल्ड कैश डिस्काउंट एंड दिस इज़ गिवन फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट. तो लोहित ने असानका को $3 का डिस्काउंट अलाउ किया है, तो असानका इज़ ऑन द रिसीविंग साइड, तो असानका को मिला है. तो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ असानका, you should know that for her this is discount received. तो जब वो पैसे पे करेगी तो बैंक उसका ख़ुद का क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे इसको डेबिट पे लिखना पड़ेगा. she'll write bank here, and in the bank account in the cash book she'll write it on the credit side because it's a payment. यहाँ पे $97 लिखेगी, and the other entry here on the same date is discount received. Discount received is an income. Discount received का अपना account क्रेडिट होगा और यहाँ पे जो है अकाउंट विल बी डेबिटेड. शील राइट $3 here, so she's receiving $3 discount from Lohit. So that's about it. Now what you have to do is you have to calculate the balance carried down. तो अगर if you total the credit side का total is 158 and the total of the debit side is 117. So the balance carried down on August 31, balance carried down is always on the last date of the period. So the period is 1 month, so 31st August के दिन balance carried down होगा. And here they've written 41. यहाँ पे इसको total कर देंगे 158 and 158. And then this balance carried down will become brought down for September 1. तो यहाँ पे September 1, 2018, and we'll write balance brought down and we'll write 41. तो यहाँ पे 41. So you always have to bring down the balance because यहाँ पे question में कहता है bring down the balance on 1st September. So they want you to make the carried down, the brought down for the same account. If you see the next part, these are very easy questions. बहुत scoring है ये. Name the type of discount allowed by Lohit on 9th August. तो जब goods purchase या sale हो रहे होते हैं और तब जब list price से reduce कर दिया जाता है, list price को reduce करके उस पर discount दिया जाता है, so that is called a trade discount. Trade discount is given at the time of purchase and sale. Cash discount is given at the time of payment. So cash discount सिर्फ payment के time पे दिया जाएगा. तो ये वाला जो discount है on 15th August, this is a cash discount. Okay, name the book of prime entry in which Lohit would record the transaction on 9th August. So Lohit, if you see, Asanka is purchasing, Lohit is selling. तो बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी होगी? देयर आर 7 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री. सेल्स जर्नल, परचेजेस जर्नल, सेल्स रिटर्न्स जर्नल, परचेजेस रिटर्न्स जर्नल, कैश बुक्स, पेटी कैश बुक्स एंड जनरल जर्नल. तो जब भी हम गुड्स सेल करते हैं ऑन क्रेडिट, वी रिकॉर्ड इट इन द सेल्स जर्नल. सो यू राइट सेल्स जर्नल
and Lohit will record it in the sales journal, Asanka will record it in the purchases journal. लेकिन हमें यहाँ पे ये लोग लोहित के perspective से पूछ रहे हैं कि लोहित कहाँ record करेगा. If you see the next question says here, the document that Lohit would send to Asanka recording the transaction on 10th August. So on 10th August Asanka is returning goods. तो Asanka के लिए purchases returns हैं. Whoever is doing the purchases returns, जो purchases returns जो रिटर्न आउटवर्ड्स कर रहा होता है, परचेज रिटर्न कर रहा होता है, वो डेबिट नोट इशू करता है. और जब वो गुड्स वापस जाते हैं उस सप्लायर के पास, तो सप्लायर टेक्स द गुड्स, रिसीव्स द डेबिट नोट एंड देन क्रेडिट्स द अकाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कस्टमर. तो जब फॉर द सप्लायर इट्स सेल्स रिटर्न्स, तो सेल्स रिटर्न्स जो है वो ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द सेल्स रिटर्न्स. तो जब सेल्स रिटर्न्स वहाँ पे असानका को सेल्स रिटर्न्स लोहित को जब सेल्स रिटर्न्स मिलेंगी तो वो असानका के अकाउंट को क्रेडिट करेगा और साथ में वो एक क्रेडिट नोट भेजेगा. तो इधर इन्होंने पूछा है डॉक्यूमेंट जो लोहित सेंड करेगा असानका को, दैट विल बी अ क्रेडिट नोट. In the next part, they are asking you the subdivision of the ledger of Lohit's ledger, which would contain the account of Asanka. So there are 4 subdivisions of the ledger. One is sales ledger, the other is purchases ledger, the third one is nominal ledger, the fourth one is cash book. तो सेल्स लेजर में हमारे सारे ट्रेड रिसीवेबल्स के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, सारे ट्रेड रिसीवेबल्स के. तो अगर आप देखें लोहित के लिए दिस इज़ असानका इज़ अ ट्रेड रिसीवेबल, for Asanka Lohit is a trade payable. So from Lohit's perspective Asanka is a customer. तो कस्टमर का अकाउंट जो होता है वो हमेशा सेल्स लेजर में होता है. तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स लेजर. In the next part they are saying section of Lohit's statement of financial position which would contain the balance on Asanka's account. So Asanka is a trade receivable for Lohit, और ट्रेड रिसीवेबल्स किस सेक्शन में आते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो हमारे करंट एसेट्स में आते हैं. That's about it. And if you see the next part, they're saying the following were recorded in the books of Asanka in the year ended 31st August 2018. So here now they've changed the root of the question. तो अब जो है ये क्वेश्चन जो है वो अदर पेबल्स और अदर रिसीवेबल्स में से आगे आ रहा है. So other payables and other receivables is another topic. तो यहाँ पे आप देखें they are telling you rent payable is an expense account, telephone expenses is an expense account of course, and rent receivable is an income account. And they are asking you here कि rent payable के account में debit balance है. So debit balance brought down is a prepaid brought down, and prepaid expense जो होता है that is it's your current asset. It's your current asset. तो प्रीपेड एक्सपेंस कब होता है, प्रीपेड ब्रॉड डाउन कब होता है एक अकाउंट में? जब आपने ये रेंट पेएबल का अकाउंट बना रहे हैं, उसमें प्रीपेड ब्रॉड डाउन है $150 ऑन 1 सितंबर 2017. सो दे आर आस्किंग यू कि $150 का जो डेबिट बैलेंस है इन द रेंट पेएबल अकाउंट ऑन 1 सितंबर 2017, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है सिंपली दैट लास्ट ईयर वी हैड पेड $150 एक्स्ट्रा फॉर रेंट. सो यू से in the previous accounting period or last year Asanka has paid $150 in advance for the next period, for the next accounting year. उसने जो है वो $150 एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं. तो इसको हम एक्सप्लेन द मीनिंग में हम वी कैन ऑल्सो टेल देम दैट दिस इज़ अ करंट एसेट. दिस इज़ अ करंट एसेट फॉर Asanka बिकॉज शी विल नाउ रिसीव द सर्विस. दिस इज़ अ करंट एसेट. In the next part they are saying $25 credit balance in the telephone expenses account on 1st September 2018. तो 1 September 2018 का जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है वो क्रेडिट पे आ रहा है. तो इसका मतलब और अगर ये एक्सपेंस अकाउंट है तो अगर आपको रूल पता हो तो रूल इज़ POOP
So prepaid brought down comes on the debit side. If you see the same in the same account, if the balance is coming on the credit side on 1st September, that means कि ये जो है, so what is our year under consideration? हमारा year under consideration is 1st September 2017 to 31st August 2018. तो अगर हमारे पास यहाँ पे 1st September 2018 के दिन there is a brought down of $25, so this means it's a carried down of $25 on 31st August 2018. एंड जो क्रेडिट साइड पे अगर आता है ये, तो अगर ये क्रेडिट साइड पे आता है तो उसको आप जो है दिस इज़ एन ओइंग, ठीक है. ओइंग मीन्स कि आपने जो है वो सर्विस अवेल कर ली लेकिन आपने पैसे नहीं दिए. सो दिस $25 क्रेडिट बैलेंस इज़ एन owing, so you'll say it's an owing or an accrued या owing है. एंड you'll also say कि ये जो है the expense was the service was used up for telephone expenses but $25 wasn't paid, ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख दें the service for telephone expenses was used up but $25 were not paid. तो वो बच गए हैं, दे आर आउटस्टैंडिंग, ठीक है. सो दे आर 4 नेम्स टू एक्चुअली डिस्क्राइब ओइंग. 4-5 नाम है ओइंग के लिए सिर्फ. ओइंग, ड्यू, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अरियर्स जो है वो सब्सक्रिप्शंस के केस में क्लब्स के क्वेश्चंस में आता है. ये यूजुअली इन क्वेश्चंस में नहीं आता, अदर पेबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स में, बट अरियर्स भी आता है इन द क्वेश्चंस इन द केस ऑफ क्लब्स व्हेन दे वांट टू डिस्क्राइब एन अ सब्सक्रिप्शन दैट इज़ ओइंग. तो इधर आपको ये लोग बता रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये इन्होंने आपसे 2 सवाल पूछ लिए यहाँ पे. नाउ दे आर सेइंग कंप्लीट दिस टेबल, complete the following table by inserting the values of rent payable, telephone expenses, rent receivable, which would appear in the trial balance and the income statement and the statement of financial position. The first one has been completed as an example. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो रेंट पेबल का अकाउंट था उसमें $150 का शुरू में बैलेंस था, एंड देन वी हैड पेड 14,000 फॉर द रेंट पेबल. तो जो ट्रायल बैलेंस में वैल्यू होती है वो आपकी जो ब्रॉड डाउन के लिए एडजस्टेड होती है, तो इसलिए आप ब्रॉड डाउन को एंड बैंक की वैल्यू को हमेशा ऐड कर देते हैं इधर. तो ये दोनों ऐड होके 14,150 बन गया ट्रायल बैलेंस में फॉर रेंट पेबल, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ होगा. बट एक्सपेंसेस में आपको जो है वो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा फॉर द एंडिंग, फॉर द क्लोजिंग प्रीपेड. तो यहाँ पे क्लोजिंग प्रीपेड ये 1st सितंबर के दिन अगर आपका ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आ रहा है तो इसका मतलब 31st अगस्त के दिन आपका ब्रॉड डाउन जो है वो कैरिड डाउन, आपका प्रीपेड कैरिड डाउन विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, दैट विल बी 250. तो यहाँ से आपकी जो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू है वो यहाँ से निकलेगी 14,000 प्लस 150 माइनस 250 गिव्स यू 13,900. तो यहाँ पे आपने इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 13,900. एंड देन दे आर सेइंग कि 31st अगस्त के दिन जो इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो उसमें ये जो बैलेंस होगा ये कहाँ जाएगा. तो दिस इज प्रीपेड कैरिड डाउन. प्रीपेड कैरिड डाउन जो होता है वो हमारा करंट एसेट होता है, इसलिए हम उसको एसेट्स के सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि हमने एडवांस में पे कर दिए फॉर द फ्यूचर. टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑन द अदर हैंड, अगर आप टेलीफोन एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाएं तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम टेलीफोन एक्सपेंसेस का अकाउंट बना रहे हैं तो टेलीफोन expenses, so here if you see the closing owing was $25, and then during the year they had paid telephone expenses of 1,500. At the start of the year they had a balance of balance brought down debit था शुरू में $60 का,
तो ट्रायल बैलेंस में तो आप स्टार्ट बैलेंस और जो आपने पे किया है वो लिखेंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे $1560 will come in the trial balance in the expenses section of the income statement because it's a telephone expense, तो वो टेलीफोन का एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंसेस सेक्शन में ही आएगा. तो in the expenses section we need to calculate the value of income statement, so that is simply you need to add all the debits here. So 60 plus 1500 plus $25 will give you 1585. So 1585 goes to the expenses section of the इनकम स्टेटमेंट. तो इनकम तो डैश होगी क्योंकि ये इनकम नहीं है, एक्सपेंस है. एसेट्स नहीं होंगी, ये लाइबिलिटी होगी. लाइबिलिटी $25 की 31 अगस्त 2018 के दिन हमारे पास एक लाइबिलिटी है जो हमने वी वर सपोज टू पे एंड वी डिड नॉट पे, दैट्स $25. सो दिस इज़ योर करंट लाइबिलिटी. ओइंग एक्सपेंसेस अ करंट लाइबिलिटी. इफ़ यू सी द नेक्स्ट अकाउंट रेंट रिसीवेबल, तो रेंट रिसीवेबल का अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो देयर जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है रेंट रिसीवेबल के लिए, वी स्टार्ट फ्रॉम द बैलेंस दैट इज़ ऑन द क्रेडिट साइड. तो इनकम्स पे ओपो वाला रूल लगता है. तो ओइंग ब्रॉट डाउन कम्स ऑन द डेबिट साइड, prepaid brought down comes on the credit side, and in this case we have a prepaid brought down of $200 at the start. फिर आपसे कह रहे हैं वो ड्यूरिंग द ईयर आपने रिसीव किया है $1,500 सॉरी $1,800. तो ड्यूरिंग द ईयर व्हेन यू रिसीव, बैंक विल बी डेबिटेड, योर रेंट रिसीवेबल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड. ठीक है. सो इफ़ यू नो द डबल एंट्री, द बेसिक डबल एंट्री, जब पैसे बिजनेस में आते हैं तो आप बैंक को डेबिट करते हैं तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है. अगर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा. ठीक है. तो यहाँ पे आपने बैंक लिख दिया $1,800. So here what is happening here is that in the trial balance you will write balance at start and what you've paid, so that is $2,000. and if you see हमारे इनकम के एक्सपेंसेस तो नहीं है ये, अब इनकम के सेक्शन में दिस इज़ नॉट योर एक्सपेंस, रेंट रिसीवेबल इज़ योर इनकम. सो इन द इनकम सेक्शन हाउ मच डू यू राइट, सो यू नीड टू एडजस्ट इट फॉर द एंडिंग बैलेंस एज वेल. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है 1 सितंबर 2018 के दिन डेबिट बैलेंस है. सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप लिखें इसको तो 1 सितंबर 2018 बैलेंस ब्रॉट डाउन 500, ये डेबिट बैलेंस है. तो ये जो था ये जब कैरेट डाउन था तो ये क्रेडिट था. ठीक है. एंड दिस इज़ एन ओइंग कैरेट डाउन. ठीक है. दिस इज़ एन ओइंग इनकम क्योंकि आपके पास OPPO के हिसाब से ओइंग ब्रॉट डाउन कम्स ईयर, प्रीपेड ब्रॉट डाउन कम्स ईयर, प्रीपेड कैरेट डाउन कम्स ईयर, ओइंग कैरेट डाउन कम्स ईयर. सो यू राइट 500. तो अब हमें पता चलेगा जहाँ बैंक होता है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पर आपका इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू होती है. तो आप यहाँ पे यू विल सिंपली ऐड द 3, सो 200 प्लस 1800 प्लस 500 गिव्स यू 2500. तो यहाँ पे आप 2500 लिख देंगे इन द इनकम एज एन इनकम. सो यू गाइज मस्ट नो दिस एंड you guys should know this, that income statement is not based on cash concept. income statement is based on accrual concept. तो income statement में हम जो पैसे मिल रहे होते हैं और जो पैसे पे कर रहे होते हैं, it doesn't matter. What matters in the income statement is how much for an expense you need to see how much service you're using up, and for an income you should see how much service you're giving. ठीक है. तो इधर आपने 2500 लिख दिया as an income in the rent receivable. एंड देन ऑफ कोर्स आपकी जो ये दिस ओइंग इनकम मीन्स दैट आपने सर्विस दे दी लेकिन लोगों ने आपको पैसे नहीं दिए. तो जो आप जिसको आपने किराए पे जगह दी है उसने आपको पैसे नहीं दिए, उसको आपने सर्विस दे दी है, तो अब वो आपको पैसे देगा. सो दैट बिकम्स योर करंट एसेट एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट योर लाइबिलिटी. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस क्वेश्चन. What I do is for my students in school, I make a table for them so that they can remember this. कि एक टेबल बनाते हैं छोटा सा,
और उसमें हम जो है वो इसको 4 में डिवाइड करते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास वी हैव करंट एसेट, वी हैव करंट लाइबिलिटीज़, वी हैव प्रीपेड, वी हैव ओइंग. तो यहाँ पे हम प्रीपेड एक्सपेंस आपका करंट एसेट होता है, ठीक है, क्योंकि आप पहले से एडवांस में पे कर देते हैं फॉर द एक्सपेंस दैट यू विल यूज़ अप इन फ्यूचर, ठीक है. इसी तरह प्रीपेड प्रीपेड इनकम इज़ योर करंट लाइबिलिटी. वाई? बिकॉज पीपल हैव नॉट टेकन सर्विस फ्रॉम यू एंड दे हैव पेड यू इन एडवांस, ठीक है. तो अब आप सर्विस देंगे. If you see in the next two boxes we say okay, owing expense is your current liability because आपने जो है वो सर्विस यूज़ अप कर ली और पैसे नहीं दिए, they are outstanding, they are due. And owing income is your current asset because आपने सर्विस दे दी है लेकिन आपको लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं. So that's about it. ये जो है ये if the students know this, so they know that statement of financial position में कि प्रीपेड एक्सपेंस और ओइंग एक्सपेंस, प्रीपेड इनकम एंड ओइंग इनकम, इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है. सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.